और अभी क्या चल सर रहा है बिफोर आपका? इंटरव्यू तो मुझे लगता है मैं प्रिपेयर्ड हूँ। इंटरव्यू देने के बाद आप समझे नहीं। आई नो यू आर अ ऑनेस्ट गाय, आई नो यू लव बीइंग ऑनेस्ट, बट कंपनी में देखो क्या होता है। सी, आपको बाकी कैंडिडेट से बेटर बनना है, ये चीज आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। तूने फ्लैट नो आंसर दे दिया, आपको जस्टिफाई भी करना था, सर मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपकी कंपनी में जाऊंगा, चीजें सीखूंगा, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करूंगा। A very good afternoon, Soumyadeep. How are you? sir, I am fine, sir. Okay. Could you please tell me something about yourself? Thank you for giving me this opportunity to represent myself at the front of you. Uh, Hello, sir. I am Shomodhi Mukherjee. I am a final year student of Computer Science Engineering at Techno International Newtown. Uh, I am a problem solver, also a critical thinker, and I learned C++ and Java, and I also have knowledge about DBMS, and I also learned cloud computing and tried to doing some project about cloud computing, and my hobbies is playing cricket and playing football, and I have done also. Java and C++ hotel management project in by myself an individual, and it is an individual project, sir. That's all from my side, sir. Okay. Could you please elaborate a bit more about your family background and your interpersonal skills? Sir, my mom is a government employee, and my father is a businessman. He has a small shop in our near market, and my and what do you tell, sir? My family background, and after that. Yes, I asked your interpersonal skills. So interpersonal skills, sir. I am a critical thinker, and I am a good also a public speaker, and I am a problem solver, and I have some leading. I have some ability to lead my team, sir. It is my personal skills. Okay. Soumyadeep, what do you mean by cloud computing? Sir, cloud computing is a modern day technology. We use before you use server, but we at that time we use cloud computing to maintain data and provide a better environment to the software engineer to testing, developing, and it is a new technology to make the smart city or IoT related project, and it is a great security advantage, and it is based on internet connectivity. So it is a modern technology we use from developing our city, our home, our area. So and Amazon Web Services start the fast cloud computing platform, and after that, many companies like Microsoft Azure and Google has a own own their own same platform. Google has Okay. a platform. Okay. Do you know Gmail uses which cloud services? So Gmail uses Google individual cloud services that Google maintain that Google use for Google search engine, and it's a software providing. It's a SaaS type of cloud computing. Okay. So could you please explain what is platform as a service and what is SaaS and PaaS, SaaS? Has sir, yeah, sir, so okay. So first is IaaS, that is the infrastructure as a service. So like a AWS, here is a we pay some monthly amount to use this server or use this service, and it is and when we can upload something and we can doing something testing and developing something project in IaaS. So PAS, we use the Microsoft Azure, the new that they use PF. That's a platform-based platform as a service. So here we upload here is a platform there we upload some projects. We develop something, we testing something. And it is a SaaS, that is a software as a service. So here the Google use some software providation that they provide some companies like cloud software. It is a SaaS. Okay. In your resume, you have mentioned that you are good with Java, Yes. and you have also mentioned a project in Java. So could you please elaborate that project, ATM machine using Java programming? Yes, sir. It is the HDM machine interface
using Java programming. We use basic ATM machine functionality like withdraw, deposit, and view our balance, view our past transactions using interface, classes, objects, these types of things. Okay. So what basically I just want to know the working of your project. Like, what is the working model? So what is the working model? So we use something uh, basic Java programming like interface as main classes, normal classes, and a hash map. So the user input the money and debit the money, credit the money, view the balance. So it is a basic individual project, and I built it myself. Okay. You have mentioned about hash map, right? You have used hash map in your project. Okay. So suppose I have an array of size 100. Okay. And I Yes, have elements from 1 to 100. Numbers yes, from 1 to 100. I can input any number of times. Okay. yes. So I want to print the frequency of each number. Hmm. So we can use it in using hash map in order of one time complexity. So how are we going to implement hash map for the same? Sir, I don't able to answer sir, at Okay, that no time. issues. About your project, could you please tell me the accuracy of your project? Like, is it a error-free project, or there are bugs in the project No, sir. which needs to, It is a error-free project, sir. and any future scope of the project? Sir, yes, it is a future scope project. We cannot add database in this project. If you will database, it's a proper ATM machine system, and we upload it and we modify it for future. Okay, so what was your role basically in the project? Was it a solo project, or was it a team So it project? is a solo project. I develop the project myself. I doing the whole code myself, and I try to doing my best and giving my best to the project. Okay, so during your project, you might have faced some errors or difficulties. Okay, so how did you overcome those difficulties? So I feel several errors, I see some Google, I Google it something, and I watch some YouTube videos. So uh, I overcome these errors, and that's also. Okay. And which all libraries basically, or which all tech apart, maybe apart from Java, any libraries or technologies you have used to, make your project? No, sir. I use basics Java. Okay, basics of Java you have used. So, what is the most important feature of Java according to you? So, most important features of Java is the first is it is an object-oriented programming language. We use classes, Okay. objects, and it is make ourselves as a it is easy for us to use this programming language, and we use a JDK and JVM and JDK Java developed in Java virtual machines. So we using JDK we compiling the Java code, and after that it is a bit code. So it is a platform independent, like C++ is a platform dependent code, but in Java it is a platform independent code. So we this bit code we use like other machines, and using JVM we interpret it in machine language. So it is so Java is giving the easy and trustable programming language for us, and so I use Java, and I like the object-oriented features like encapsulation, polymorphism, abstraction, the inheritance of these features of Java. Okay. Could you please explain me the use of final keyword in Java? So yes, final keywords. In the final in the final, I don't remember the final keyword. Okay. What is the difference between static public void Huh. and public void? Sir, static public void and public void. Sir, public void is a normal thing for void function that is, and static is a static type of data that allocates uh, memory at also. Okay. How memory is managed in Java? So it's managing using dynamic features.
like object oriented classes and objects. So we can allocate a one memory. So if you need more than memory, so if we allocate it, and if you don't need, so it's okay. And it is a Okay. runtime environment. So at the runtime environment, it allocates the memory according the needs. Okay. What is inheritance? So inheritance like it is as the father gives as a child inherits some features of the father as the so as a in inheritance as a superclass inherits some features in the subclass, and we use extend keywords to inherit the features, and we use it many times. So in the inheritance we get the reusability, that we can use if we use a method, reuse a function, or reuse a variable. So we don't write the variable or methods many times. So it is the benefits of inheritance. It is the inheritance, and we have Okay. many level of inheritance: hybrid level, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, hybrid inheritance. What is multiple inheritance? So multiple inheritance like that I tell you that when a class when the superclass is something, so we inherit the superclass inherited some features to many of their subclasses, and so one so as a like a superclass A, they inherit the features to C, subclass C, subclass D, subclass F, and after that they inherit the features. So it is a multi-level inheritance, like a tree that we have inherit the features in a I'm not level. asking about multi-level inheritance. I'm asking about multiple Okay, inheritance. multiple inheritance. Okay, sir. So Yes. multiple inheritance that like I tell you that the superclass they inherit their features like many subclasses, one, two, three subclasses. That it is a multiple inheritance, that the superclass inherited many multiple inherit their features in many multiple subclasses. Okay. What is the difference between array and object? Sir, array and object. Sir, at first that array is a contiguous memory location, and objects are dynamically allocated memory location. We use class form defining objects, and in array we use some data type like int array something, and second, and it is a basic data structure. In using insertion, deletion, in performance in array, it's complicated, but in objects insertion, deletion, so we have to manage themselves. But array is a data time. If we access an element from array, it is a short time, but in objects we have something more time to um, um, something more time uh, to get this job and get the element to the access, get the access to the Okay. element. What is the difference between private and protected access modifier basically? Hmm. So private in the private protected, we don't use we don't use the objects on the variables in other classes, but in protected for some basis, if there is a parent class, we use the protected keyword, so we inherit some features and giving some features to their subclasses. Okay. What is entry control loop and what is exit control So loop? entry control loop is a while loop, entry control loop, because we put the condition on the front of the while loop, and the do while loop is the exit control loop, because when we exit then we put the condition. So it is the entry control loop and it is the exit control loop. That's all. Any sorting algorithm you would like to explain me? Yes, like I would to explain you the merge sort. Okay. Okay, please proceed. So here in the merge sort, we divided in a array. We divided the array in several parts, and after several parts, we sorting them. And after sorting them, we use the merge function to merge the sorted array accordingly. To though we at the for this we get the sorted array in. So
there's a unsorting order. So using the merge sort, this type of features, so we get the sorted array. What is the best case and worst case time complexity of merge sort? So the best case time complexity in the merge sort is big O of log n, and the worst case time complexity is O of n square. Okay, out of merge sort and quick sort, which is better, which is more preferable, and why? Uh, so quick sort is more preferable because in the worst case the time complexity of quick sort is good, but in the best case the time complexity is quick sort is bad. So we use quick sort for the many times that when we for solving some problem, we don't have the best case type. We have the alternate extent we have worst case. So that time we use quick sort. Okay. Have you done any No, internship sir. or any training? No, sir. No internship. No training. Okay, and certification you have done about the As a Java Java programming and C++, itself. also Python. Okay, and which all latest technologies are you working these Sir, cloud days? computing. Cloud computing. Okay. One very simple question, like why don't you want to further, pursue further studies? As I have seen that your CGPA is quite good. It's 8.77. Yes. So it would be a great choice for you to prefer further studies, do either masters in technology or Sir, masters in at that business. time I don't think about it because my father is aged and my mother is Okay. timing to dead. So I want to support them financially and as a guardian. Okay. So at that time I don't want to pursue my study, but after that I want to pursue my study. Okay. After that, you want to pursue After your study. after Okay. 4 or 5 years after. After 4 or 5. So, what is your basically long-term goal? Like after 10 years, where do you see yourself? Like Sir, sir, what path have you decided for yourself? sir, I after 5 years, I want to learn more skills, more, and I want to be matured in myself, and I gain some experience and knowledge, and I want to need some good time with my office colleagues, and Okay. I gain some knowledge and I think I get a great position in your get a great position and great experience in your company and interacting with colleagues and share the good experience with them. Okay. In your appointment form, you have mentioned that you are booking this mock interview for Accenture and TCS, right? So, why do you want to join these companies and not other similar companies? Mainly, I focusing on TCS. If because TCS is the Indian largest IT company, and the founder of the TCS is J.D. Tata, and I respect them. And TCS has a and TCS owner is Tata Sons, and there's a great philanthropist. They donate many things in COVID in and they are not and they are an industrialist, so they build the country. So I want to join the journey of Tata Sons and Tata Group, so I joined TCS. And also the TCS have a good work experience, a good work life balance, and uh, job security. For that I joined TCS. Okay, so you said that you are in urgent need of work, you are in need of money since your father is, getting Mm, aged. Totally respect mm, that. But suppose there is some delay in joining, there is a 1 year delay in joining, for mm. example. Okay, if some other company hires you at, a package slightly greater than ours package, and they offer you the same job role, so would you wait for TCS for the joining, or since you need an urgent job, you need money, right? You need to support your parents and family in that. So would you wait for TCS or join the other company Mm, because the package is higher and the job role is same? No, but I want to join the TCS because it told that TCS is a greater impact in our country, and I improve myself in 1 year to get a more to get me more matured, more experienced, and more knowledgeable at TCS. And I want to help. I want to help country and doing something for country with, by using the TCS as a platform.
Okay. So how are you going to utilize this 1 year? I am not asking about the technical skills. Obviously, you'll gain some technical Hmm. skills, but how are you going to improve your personality, or which all other than studies, which all skills are you going to learn in this coming 1 year? If suppose the joining is delayed by a year. Sir, I want to learn some managerial skills and some communication skills. I some managerial skills and some communication skills. And uh, before and also I learned the technical skills like new technologies, but I have learned some communication skills like managerial skills and some and I want to play for in hobby. I want to play some football or cricket. In 4 years, I don't play the football and cricket. I in this time I learn something and focus in the football and cricket, because in the way because it is a team game, and I think in a TCS I want to be a team player. So in team game, because cricket and football is a team game, it's helped me to build me as a team player. Okay. Uh, Suppose a very simple question. Any social media platform do you Yes, use? Instagram, Instagram Facebook. and Yes, Facebook. sir. Okay. So suppose at TCS we are running some social media campaign. Okay, we are running a program and we want everyone to, suppose we are running all India marathon where the entire country is going to run at least 10 to 12 kilometers a Yes. marathon. Hmm. Okay. So suppose you want to promote it on social media. Yes. We give you a task to run a social media campaign. Which social media would you prefer Sir, for that? Instagram, because Why so? because at that time Instagram is a trending page and everyone use Instagram. So I promoted it Instagram, and Instagram is a good reel feature. So if we something post something real about our marathon, so it's have a great impact to our projects or in our events. Okay. So, like, what contribution you would do to grow your campaign in a better way, like in the social media, like, not only social media. Apart from that, what all things, what all efforts are you going to put on, to take this or to grow this campaign at a bigger level? I just want to check your leadership, your Yes, yes, managerial yes. skills. As you just now you said that you see yourself as a manager after a few years, Yes, right? sir. So I just want to check, Sir, like, how are you going to in manage things? Instagram, at first I post some several things, and I build a poster. I post them to my friends, to my colleagues, and I request to my all my colleagues to send them their friends. And if they all person is no, without company versus all person is joining this, so I appeal for my family members, my friends to join, and I put some reels with my friends or friends or office colleague to promote this, and I show the benefits I show the benefit of the marathon, and I put I show them the benefit of marathon, and I written it and making reels and posted it in Instagram, and I tell my friends, and also I build a community to grow this marathon, grow this campaign in a make this campaign a great, and everyone join it. Okay, and basically, you'll spread awareness about the Yes, yes. importance of running, Running is like importance of being healthy, yes. right? Okay, great. What attracted you to IT industry, Samedeep? Sir, great. Sir, I am a computer science student, and I learned computer science when I am in higher secondaries. And today is the world is digital. The world made digital, and after that we have some security issues. So I choose cloud computing. The cloud computing is a great security benefits and great security servers and maintain. So I help we develop the cloud computing, so it can develop our country digitally, and for that, and I want to build some project like machine learning and AI. So this attract me to go in the IT industry. Okay, and according to you, which is the most important quality you believe a fresher must have? Sir, I think the fresher has persistence and willing to know new things, and try and work hard for better goal and achieve their goals.
Okay. Are you a regular learner like you study daily, or are you exam based learner like you study one night No, before no, no, exam sir. and I just am a clear the regular exam? learner, but I regular study 2 to 3 years, 2 to 3 hours. But that's all. But I know no 2 to 3 hours, and not more than that. Okay. And how adaptive are you? Like, if we put into it, if we put you to adverse situations, suppose we put you to a situation where apart far away from Bengal. Suppose we send you to Chennai, or maybe to Uh, Delhi or Kashmir, or maybe to Rajasthan. Would you be able to Yes, survive there? because I have to survive many places. I go into the trekking with my brothers in here in Himachal Pradesh and our Purulias. So and I facing some problems and critical situations staying in jungle. So I think that staying in jungle is better than to staying in a city or a house. So I think I have ability to survive there. Okay. Any recent achievement or rewards of TCS you know of? Any recent achievements? Uh, any recent achievements? Okay, TCS present in how many countries? Any idea of it? Most of the European and American countries, TCS is present. Like all European countries, TCS working with SAP and Dutch Bank, Dutchess Bank, etc. Companies and clients. TCS invests a lot in startups. Yes. Are you aware of any of the startups where TCS has invested? No, sir. But no, sir. I don't aware of this. Tagline of TCS. Sir. You said TCS is a very good Yeah. company and you would wait for a year for TCS, but you do not know the basic things about Sir, TCS. tagline of This uh, is not no, expected. sir. Tagline of company, sir. But Okay, one last question I would like to ask. We have over 8 lakh applications hmm. this year, and why should I select you? Give me 2 to 3 legitimate reasons so that I am convinced. So first, I am a fast learner, and I am a persistence guy, and I am an honest guy. So I try my best to and I give all things to develop myself. And everyone has some flaws. So I have some flaws, but I think I overcome it, and I give the best of my all. I give best of my all things to the TCS, and I am a good learner. And I am also a good team member because I play some team match and team game. So I think that for those reasons you hired me. Okay, great. What would you prefer, morning shift, afternoon Any shift, or shifts, night shift? I am any Any shift. shift. And are you aware that TCS has a bond? So you cannot leave the company before bond, otherwise you'll have to pay Oh, sir, the bond fine. Are you okay with yes, that? sir, I'm okay with that. Okay, great. It was lovely talking to you, Somadeep. Your result will be communicated Hmm. shortly over email. Wish you all the best. ओके सौम्यदीप, दिस वाज द एंड ऑफ मॉक Hmm. इंटरव्यू. तो अभी जल्दी से फीडबैक कॉल डिस्कस Hmm. कर लेते हैं. तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉक Mock इंटरव्यू का? लाइक, interview. वाज इट वर्थ इट, Yes, mock interview और is वाज इट अ no, 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 वेस्ट sir, ऑफ sir. It मनी? is worth it. It is completely worth Okay. it. So your preferred language in which you would like to receive feedback, हिंदी में चाहिए और सर इंग्लिश में अब चाहिए? जो अच्छा होगा आपको आपको जो मतलब हिंदी हाँ हिंदी आप ये कंफर्टेबली सर हाँ समझते हो? हम हिंदी कंफर्टेबल समझते हैं. ओके, तो हिंदी में करते हैं. तो आई वुड लाइक कि पहले आप अपने आप को फीडबैक दें, लाइक क्या आपको लग रहा था, कि क्या आपके अकॉर्डिंग आपने क्या प्लान किया था, क्या चीजें एज पर ना सर प्लानिंग चीजें चली, इस पर जो प्लानिंग आपने नहीं. क्वेश्चंस एक्सपेक्ट जो किए क्वेश्चन थे एक्सपेक्ट वही नहीं नहीं पूछे जो गए? क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए तो वो तो पूछे गए. बट मैंने जो लाइक आई बट आई फॉरगेट समथिंग लाइक tagline of TCS and startups that TCS invested. I heard that like persistence is the company startup company that TCS invested, and tagline of TCS and clients of TCS. So I know this thing, but at that time I forget. I want to know this thing before my interview. अच्छा, आपको क्या लगता है इस मॉक इंटरव्यू के बाद जो आपका एक्चुअल हाँ. इंटरव्यू है
उसको आप पहले से थोड़ा बेटर दे हाँ पाएंगे या ऐसा है कि ना सेम ना ही ना रहेगा सर? अच्छे दे पाएंगे। अच्छे से आप दे पाएंगे, है ना? अच्छा, मैं जस्ट एक आइडिया गेन हम्म। करना चाह रहा हूँ कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो। लाइक बिफोर इंटरव्यू आपके मन में क्या चल रहा था, ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या चल रहा था, और अभी क्या चल सर रहा है आपके बिफोर मन में? इंटरव्यू तो मुझे लगता था मैं प्रिपेयर्ड हूँ। इंटरव्यू देने के बाद तो हम्म, ठीक है, बट मुझे कभी कुछ कुछ जगह में कुछ टेक्निकल जगह में आपने देखा, हम्म, और कुछ एचआर राउंड हम्म, आप हम्म, टीसीएस के बारे में पूछ रहे थे, तो हम्म, मैंने टीसीएस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम्म, आंसर दिया, थोड़ा थोड़ा नहीं आंसर दे हम्म। पाया। वो जगह मतलब मैं थोड़ा हो गया, बट आफ्टर दैट आई थिंक दैट आई शुड work some places, some so I work here before my interview, like TCS basic, ओके, moto basic ओके, clients. ओके, चलो ठीक है। अभी अपन कुछ कुछ डिस्कस करते हैं यार। देखो, कुछ चीजें जो बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो, आपके पास दो एम्प्लॉय आए हैं, ठीक है, ए और बी। ए एम्प्लॉय बोल रहा है कि थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आपकी कंपनी के लिए काम करूंगा Hmm. हमेशा, ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर यू। बी एम्प्लॉय थोड़ा ठीक है, बेटर है, ट्रेनिंग कम देने की जरूरत है, बट वैसा है कि 2 या 3 साल बाद कंपनी छोड़ Hmm. के चला जाएगा। आप ए या बी में से किसको प्रेफर मैं करोगे? तो एक प्रेफर करूंगा सर। ए को प्रेफर करोगे ना? उसको भले सिखाना पड़ रहा है, बट आपको पता है कि वो हाँ। लॉयल रहेगा कंपनी के टुवर्ड्स। तो उसके लिए जो हम एफर्ट और टाइम दे रहे हैं, जो मनी उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हाँ। वर्थ इट है, राइट? अब आपके अकॉर्डिंग आपने बोला कि यार अभी मुझे जॉब की हाँ। जरूरत है, मैं जॉब कर रहा हूँ, बट आने वाले 3 4 5 साल में डाउन द लाइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं एमटेक करूँ, आगे फर्दर स्टडीज पे जाऊँ। व्हाई वुड आई ट्रेन यू ओवर अदर कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू वर्क इन टीसीएस फॉर द नेक्स्ट 10 No, years? sir. But if I join in, if I give this opportunity, sir, I do to join not MBA. I take the MBA for managerial roles. So I. सी, आप Hmm. समझे नहीं। आई नो यू आर अ Hmm. ऑनेस्ट गाय, आई नो यू लव Hmm. बीइंग ऑनेस्ट, बट कंपनी में ड्यूरिंग द इंटरव्यू देयर आर मेनी थिंग्स जहां पर हमको झूठ Hmm. बोलना पड़ेगा। वंस यू ज्वाइन द Yes. कंपनी, जिस एचआर ने आपका इंटरव्यू लिया, शायद जीवन में आप उससे फिर कभी नहीं हाँ। मिलोगे, या मिलोगे भी तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमने तो बोला था हाँ। तुम कंपनी में हाँ। रहोगे। दे टू इंटरनली नोस के 2 से 3 साल बाद सब स्विच कर हाँ। लेते हैं, या तो एमटेक कर लेते हैं, Hmm. कुछ कर लेते हैं। नो बडी इज गोना स्टे फॉर Next 30 नेक्स्ट years. 30 years। दे ऑल्सो नो दैट, बट हम सामने से नहीं Hmm. बोलेंगे ना हाँ वो सर। चीज, है ना? तो ये चीज कभी भी Okay. नहीं बोलना, राइट? आपसे लॉन्ग टर्म आपसे पूछ रहे हैं एमटेक करना है, साफ No, मना कर sir. दो, नो सर। कोई, अगर मुझे करना होता तो मैं अभी ही हाँ। कर लेता, मैं आपके जी। लिए इंटरव्यू में आता ही नहीं। बट क्योंकि मुझे नहीं करना, इसलिए द मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेजेंट इन योर इंटरव्यू इज अ प्रूफ ऑफ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन Okay. फर्दर स्टडीज। मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, आपकी कंपनी में काम Okay. करना है, दैट्स इट। मैं एमटेक करने के बाद भी वापस से आपकी कंपनी के लिए लुक आफ्टर करूं, इससे बेटर है कि मैं 2 साल एमटेक हाँ। करूं किसी Good. कॉलेज में, उससे बेटर है कि मैं दो Good. साल आपके यहाँ काम कर लूं। दिस विल गिव देम Hmm. हैप्पीनेस, Yes. राइट? दूसरा, व्हाट आई फील इज, सपोज आपके पास दो Hmm. टीचर्स हैं, वन इज अ टीचर ए एंड अदर वन इज अ Hmm. टीचर बी। अब टीचर ए के पास नॉलेज कम है, बट ही एक्सप्लेन्स थिंग्स Hmm. वेरी वेल, राइट? टीचर बी के पास नॉलेज तो Hmm. बहुत है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो, Hmm. राइट? जब मैं आईआईटी के लिए पढ़ाई करता था, मैथमेटिक्स के दो टीचर थे, एक रत्नेश सर थे, एक Hmm. जगदीश सर थे। जगदीश सर वो ट्रिमेंडस इन नॉलेज, नॉलेज Hmm. नेक्स्ट लेवल थी, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, केवल टॉपर्स ही उनको रिलेट कर पाते थे, एक एवरेज Hmm. बच्चा नहीं कर पाता था। वहीं रत्नेश सर के पास नॉलेज बेस कम था, लेकिन बच्चे उनसे Hmm. रिलेट कर पाते थे। जगदीश सर की क्लास में 20 30 लोग भी नहीं होते थे, रत्नेश सर की Hmm. क्लास में 400 500 लोग Yes. होते थे। तो सौम्यदीप, आपके इंटरव्यू से मैं ये तो समझ गया, बच्चा नॉलेज में कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कहीं तक नहीं है। ऑल आंसर्स, ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स विच यू गेव वर करेक्ट एंड टू माई एक्सपेक्टेशन। आपके आंसर्स वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट Ex- एक्सप्रेशन, जो आप उनको अच्छे से जस्टिफाई, उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट यू नीड टू डू, अभी तो आपका डिजिटल का हाँ। इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, उसको हाँ। अच्छे से दो। बट डाउन द लाइन हमको आगे और हाँ। इंटरव्यूज देने Hmm. हैं, राइट? सो हमको सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि इनहेरिटेंस क्या Okay. होता है, लिटरली वी हैव टू फ्रेम द लाइंस कि हमको इनहेरिटेंस को समझाना कैसे है, या इंटरव्यू में आंसर कैसे देना। दीज आर टू Okay. डिफरेंट थिंग्स। मुझे इनहेरिटेंस आता है, एक Hmm. अलग चीज है। मैं इनहेरिटेंस आपको समझा पा रहा हूँ, ये एक अलग चीज है। आप अपने हैंड एक्सप्रेशंस का यूज Hmm. करो, है ना? और थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपका क्लियर रखो, आप क्या बोल रहे हो वर्ड्स, वो आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा, राइट? तो आंसर्स को फ्रेम करो, पहले बताओ इनहेरिटेंस क्या हाँ। होते हैं,
फिर उनके एग्जाम्पल्स कोट करो एंड उस हिसाब से हम आगे इनहेरिटेंस की नीड क्यों पड़ी ये सब चीजें बताओ आप। राइट डाउन द लाइन देखो क्या होता है, सी आपको बाकी कैंडिडेट से बेटर बनना है, ये चीज आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। तो इनहेरिटेंस सबसे पूछा जा रहा है, तो मैं ऐसा क्या आंसर करूं जो बाकी बच्चों से यूनिक हो। तो बाकी बच्चे इनहेरिटेंस बता के छोड़ दे रहे हैं, मैं इनहेरिटेंस की नीड बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस क्या होता है एग्जाम्पल के साथ कोट कर रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। राइट और लंबे आंसर्स दो ताकि कम क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ भी पूछने के चांसेस बढ़ेंगे फिर। ठीक है, दूसरा मे बी शायद आपके कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम है या जो भी है उसको रेक्टिफाई करो, बट योर पोस्टर शुड बी दिस थ्रू आउट द इंटरव्यू। आपका पोस्टर ही है, आप घुसे हुए हो कैमरे में, राइट, दिस इज नॉट द करेक्ट पोस्टर, ये या दिस इज द करेक्ट पोस्टर। राइट यूज योर हैंड एक्सप्रेशन और थोड़ा सा 1% वो जील बढ़ाओ, यार आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी सर, चाहे कुछ हो जाए। राइट आई हैव नॉट डन एनी इंटर्नशिप, ठीक है, आपने फ्लैट नो आंसर दे दिया, आपको जस्टिफाई भी करना था, सर मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाया हूं लेकिन आपकी कंपनी में जाऊंगा, चीजें सीखूंगा, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा और आपकी कंपनी ही मुझे ज्वाइन करनी है। इंटरव्यू में कम से कम 6 से 7 बार ये चीज बोलो, वो सामने से नहीं पूछेगा आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी है, आपको बोलना पड़ेगा 6 से 7 बार, यू विल हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू से दिस लाइन, राइट, है ना। इनहेरिटेंस में सर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट होगा अगर वो जावा पर और रूप्स पर है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनहेरिटेंस फीचर का विच इज अ वेरी पावरफुल रूप्स टूल उसका मैं यूज कर सकूं ताकि हमारी कंपनी के लिए हम एक बेटर मॉडल डेवलप कर सके, बेटर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सके, क्लाइंट को बेटर वे में सर्व कर सके। जब आप बोलते हो ना हमारी कंपनी, आप एज्यूम करके चलो कि यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, नाउ एक क्लाइंट मतलब आपकी टीम मीटिंग चल रही है, आपका मैनेजर बैठा, आप उससे डिस्कशन कर रहे हो, इससे तो डर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बेटर वे में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। राइट ओके, कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स, नॉट एट ऑल, अदरवाइज दे वुड हैव कंडक्टेड एग्जाम फॉर दैट। इट्स अबाउट हाउ यू आर एज अ पर्सनैलिटी, आपको कितना ग्रूम कर सकते हैं, आपको कितना ट्रेन कर सकते हैं। मम्मी पापा होते हैं ना, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे से अलग एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई तू टॉपर बन जा, वहीं दूसरे बच्चे से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है भाई तू पास हो जा, है ना। तो आपको देख करके हम जज करेंगे कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, आपको आगे क्या रोल दे सकते हैं, डाउन द लाइन आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपना, राइट, है ना। ठीक है, बाकी तो सब Sir, अच्छा what है। do you think, sir? एनीथिंग If I selected or ninja or digital? डिजिटल का तो मुझे थोड़ा चांसेस हाँ, कम लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस लेवल का टेक्निकल नॉलेज होना हाँ, चाहिए डिजिटल के लिए वो हाँ, थोड़ा सा कम है। बट अगर रिक्वायरमेंट अच्छी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, और इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ इंटरव्यूअर यार, अगर उसको आप पसंद आए हो तो डिजिटल का भी हो जाएगा, निंजा का तो 100% हो जाएगा। विद दिस नॉलेज जस्ट रिमेंबर आपका इंटरव्यू है 2 बजे, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एकदम खिल के जाना यार, लगे कि यार भाई बाप आदमी आया है, फाड़ आदमी आया है भाई, लाइक इंटरव्यूअर की आंखें फटी रहना चाहिए कि यार ये कैंडिडेट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। दिन के एंड में जब वाइंड अप करें तो वो उनको नाम याद होना चाहिए, यार सौम्यदीप था एक बंदा जिसमें दम था, उसके बराबर किसी में दम नहीं आया। राइट, वो एनर्जी अपने अंदर से लाओ, थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ाओ रूम का, राइट, सो दैट योर विजिबिलिटी इज मोर। अब रेज्यूम की बात करें तो रेज्यूम में सबसे पहले आप अपना कॉलेज आइकन ऐड करना अपनी फोटो के बगल में, ठीक है। दूसरा, एवरीथिंग सीम्स टू बी, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब इट्स नॉट अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आपने लिख दिया कि मैं क्रिएटिव हूं, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, एनर्जेटिक हूं, ये आपकी स्किल है। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल्ड हो, वहां पर जाना, आप मेरा रेज्यूमे देखना एक बार, है ना, उसमें जो मैंने करियर ऑब्जेक्टिव डाला है वो देखो, उससे आपको आइडिया मिलेगा क्या डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में आपने कॉलेज के नाम के आगे लोकेशन नहीं लिखी है, लोकेशन बहुत सर जरूरी है जानना। मतलब जो है न्यू टाउन वही लोकेशन है, मतलब सर क्या लिखे? अच्छा, न्यू टाउन है कहाँ पर, ये लाइक स्टेट ओके, एटलीस्ट मेंशन करो ताकि हमको ये चीज पता चले कि आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हो रही है, आप कहाँ कहाँ रह रहे हो, अकॉर्डिंगली आपके लिए हम लोकेशन दे सकें, राइट।
है ना। उसके बाद ये आपने स्कूल्स में भी लोकेशन नहीं लिखा, प्लस स्कूल में बोर्ड नहीं लिखा। बोर्ड की अहमियत मैं आपको बताता हूँ। फॉर अ यूपी बोर्ड 69% इज अ Yes, my वेरी गुड स्कोर, I am for बट फॉर state अ board. सीबीएसई बोर्ड इट्स I am also from state board. राइट। तो वो आपने लिखा नहीं, यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो इन योर Yes. रिज्यूमे, राइट। ओके। स्किल्स को आप दो पार्ट में ब्रेक करो, वन इज योर सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर इज Okay. योर टेक्निकल स्किल्स, राइट। दोनों को एक साथ मत लिखो, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। आप एक बार मेरा Okay. रेज्यूमे देखना, और वो रेज्यूमे का पूरा कोर्स देखना, पूरी ट्रेनिंग 12 पैरामीटर पर मैंने बात की है। आपको पूरा रेज्यूमे अपना चेंज Okay. करना है बेसिकली, राइट। प्रोजेक्ट मैंने कैसे डिटेल में, आपने अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, क्या यूटिलिटी है उस प्रोजेक्ट की, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उस प्रोजेक्ट की हेल्प से, पहले वो लिखो। कितने लोगों ने बनाया, आपका क्या रूल है, क्या टूल्स का यूज किया, क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और फंक्शनिंग, ये सब कुछ लिखना होती है। भले एक की जगह 2 पेज का रेज्यूमे Okay. बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ, ये देखो अलाइनमेंट क्या लिखा हुआ है, जावा प्रोग्रामिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट लाइन में एंड ऑनलाइन। ये 3 लाइन में क्यों लिखा है, जब एक ही स्टेटमेंट है तो एक ही लाइन में लिखो ना। No, sir. It's सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद सॉफ्टवेयर लिखा है एक लाइन में, अगली लाइन में एन ऑनलाइन नॉन क्रेडिट कोर्स, ये क्या but मतलब निकला so इसका। भाई ये रेज्यूमे आपका लाइफ है मेरे भाई, दिस इज एवरीथिंग। ये आपके 4 साल की कमाई है, या आप एक टीवी हो, या आपका पैम्पलेट। अगर पैम्पलेट ही अट्रैक्टिव नहीं बनेगा तो मैं टीवी क्यों खरीदूंगा। आपने इसमें समय नहीं दिया, दिस शोज आप इनसिंसियर बच्चे हो। आप अपने खुद के रेज्यूमे में समय नहीं दे रहे, आप हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट में क्या सिंसियरिटी दिखाओगे। गेटिंग माई पॉइंट। इससे आपका बिहेवियर जज किया जा रहा है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, टीसीएस में 50% वेटेज होता है इसका। सो मेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तो अभी आप इंटरव्यू दे दो, उसके बाद आपको पूरा कोर्स देखना, रेज्यूमे कोर्स, मेरा पर्सनल रेज्यूमे देखना। इतना नीट एंड क्लीन रेज्यूमे आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने क्या कंटेंट लिखा उसका मार्क्स नहीं होता, आपने उस कंटेंट को कैसे लिखा उसका मार्क्स होता है, उसका भी मार्क्स होता है। sir, I और नीचे want to डिक्लेरेशन modify my लिखो कि जो भी resume, मैंने, but TCS has blocked the resume, sir. नहीं नहीं, तो उसमें आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे ले जा सकते हो एज अ Uh, गूगल ड्राइव लिंक, एंड यू कैन रिक्वेस्ट देम इफ दे अलाउ यू, दे विल कंसिडर योर अपडेटेड रेज्यूमे। बट प्रिपेयर्ड फॉर द बोथ, दोनों के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। ओके। और डिक्लेरेशन लिखो कि भाई जो भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ इट्स करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। फिर अपना नाम, सिग्नेचर, डेट वगैरह आएगा। ओके। एंड गिव योर इंटरव्यू विद अ स्माइल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। sir, Yes. Yeah. I Anything you have want one to ask question, to me? sir. I don't know TCS functionality that TCS digital interview. If the digital interview student perform average, they will call for Ninja. They will get from call from Ninja. No, no, see it. If you perform very good, you'll Yes. get directly digital. If you perform good, not for digital, but if you perform good, they'll give you ninja. Even if But you perform average, they will schedule a separate interview for ninja. Okay, there are 4 ratings. If you yes. get 4 out of 4 digital, 3 out of 4 ninja, 2 out of 4 separate interview for ninja. Not directly ninja, but a separate interview for ninja. One out of Sir, four what you reject. rating my That's it. interview? I'll rate 3. You'll get for ninja, but थोड़ा सा अपना Okay. एक्सप्रेशन अच्छा करना है। यू आर अ वेरी गुड एट टेक्निकल नॉलेज, यू जस्ट हैव Good. टू इम्प्रूव Okay. योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। यूज हैंड जेस्टर्स, हमको बताना नहीं है, यू हैव Okay. टू Okay. टीच देम। ओके, है ना। ये कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि कल के दिन अगर उनके मन में ये आए कि यार सौम्यदीप की नॉलेज ठीक नहीं है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस अच्छा है यार, टेक्निकली अच्छा नहीं करेगा तो उसको क्लाइंट डीलिंग में रख देंगे, फाड़ के आ जाएगा बंदा। समझ रहे हो। यू हैव टू जनरेट प्लस पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ। आप मेरे को बताओ, हम दोनों Uh, इंटरव्यू में, आप भी हो मैं भी हूँ, ये मेरा हाँ. 6वां इंटरव्यू है जो मैं ले रहा हूँ सुबह से। Yes. आपका पहला आपकी है। किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है आप, क्यों, व्हाई नॉट sir, यू। I am trying to यस energetic myself and confident. ना, यू हैव टू बी एनर्जेटिक और बनो यार। दिस 20 minutes आर गोइंग टू डिसाइड नेक्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ, Yes, sir. राइट। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट। सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बैठा Give हूँ it. आगे और कंपनीज Okay, में, sir. विल क्रैक इट, राइट। Okay. दैट इज नॉट अ इशू। बट कल के दिन देयर शुड That नॉट I बी अ know. रिग्रेट फैक्टर
यार आई हैव दैट चांस, मैंने वो स्पार्क नहीं दिखाई, वो नहीं होना Yes, sir. चाहिए, राइट? ठीक है। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर। जा करके अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।